Hello friends, welcome to our channel Avisan Fairfatka. Today we came to see a beautiful place in Nashik, Tapovan. Everyone knows about Ramayana. Lord Rama and Goddess Sita spent most of their exile time in Nashik, Tapovan area. This is the place where Lord Laxmana has cut the nose of demon Supernakha. That's why this place is called as Nashik. This is the place where Godavari river and the river Kapila comes together at one meeting point. So we are here to see this such a holy place. Wow. You can see this is the Godavari river which comes from the hill Trambakeshwar, and this Godavari river will meet to Kapila river. That also we are going to see the junction of meeting of these two river. Wow, it looks so awesome. So as I said, this is the place where Lord Rama and Goddess Sita spent most of their exile years in Nashik. In this area, here you can see the hut where all of them used to stay. Let us see what this Pandit is going to say सामने राम और माता about this सीता जी place. का दर्शन। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन देवता के चरण के तीन कुंड बनेंगे। ये जो बिछवे का तीर्थ है इसे अग्नि कुंड कहा जाता है। उसके बाजू में मुक्ति कुंड है और कोने में सीता कुंड, माता सीता स्नान करने की जगह। रामायण में ये जगह के बारे में वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन भगवानों के सामने सीता माता जी ने यहाँ अग्नि में प्रवेश किया था। अग्नि में से सीता जी का भगवान ने छाया रूप निकाला और रखा था पंचवटी। रावण जो पंचवटी से लंका ले गया वो मायावी रूप, असल माता जी का रूप यहाँ पर था। यहाँ कपिल मुनि जी का आश्रम है। कामधेनु गौ माता कपिला कुंड। भगवान कपिल मुनि जी तप करके नदी लाए कपिला, पंचवटी से आई है दूसरी नदी गोदावरी। गोदावरी और कपिला का आगे संगम है। यहाँ लक्ष्मण ने जो शूर्पणखा की नाक काटी है ये मुख्य जगह है। बारिश में पानी आने से यहाँ का मंदिर बंद रहेगा। यात्रियों को दर्शन मिलने के लिए ऊपर लक्ष्मण जी का मंदिर है, वहाँ शूर्पणखा की मूर्ति बनाई है। यहाँ नाक छेदन किया इसलिए गांव को कहा जाता है नासिक। नासिक का पहले नाम पद्मनगर। जिस समय भगवान वनवास करे थे दंडकारण्य और नाक काटने के ऊपर से नासिक। यही नासिक क्षेत्र में कुंभ मेला जो होता है 12 साल में एक बार, ये कुंभ मेले की जगह है। आज का आखिरी पर्व है मार्गशीर्ष महीना, गोदावरी विष्णु भगवान का प्रिय महीना। मार्गशीर्ष महीना की यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। गोदावरी संगम की तीर्थ यात्रा करने की जगह है। These are the three ponds he was talking about. And on these hills you will find Shivlingams, Mahadev Shivlingams also made from the rocks. And this is the Godavari river. The view is really beautiful, and in the rainy season it is filled with water. On the upside you can see there also you can go there, also you will find a temple. And this is the hut. Now they have built a temple over here. This is the hut where Lord Rama, Sita and Lakshman used to stay. So let us go inside and see. So if you are in Nashik,
Do come and see this beautiful and holy place. If you liked our small video, press the like button, subscribe to our channel, and do not forget to press the bell icon for future notification.